Good evening to everyone. Thank you for coming to this press conference. We have with us Honorable CM, Honorable HM. I have Dean GMC on my right and Dr. D. Sagar. So, as on date, today we already got the briefing. The cases, fresh cases reported today have come down to below 2,000 after almost 2 weeks. And today we have installed a cryogenic tank, 20,000 liters, 20 kL, liquid medical oxygen tank at Goa Medical College that will supply direct oxygen to the COVID patients at the new manifold. And with the commissioning of this tank, the present system of supplying oxygen to the trolleys should become just a redundancy measure, just a backup, hopefully never to be used. And a lot of effort went into putting this tank on a mission mode, and I'm grateful to Honorable CM and Honorable HM for their continuous support to help us get this tank, which is originally a nitrogenous tank, shifted from, I must thank Messrs. Venus Oxy, private industrial enterprise at Bicholim. They have been extremely cooperative throughout. The supply of oxygen in this tank will be directly through the manufacturer. There is no intermediary involved. The manufacturer happens to be Messrs. Praxair. Tank belongs to them. They have installed and they have commissioned, and we should see now a continuous regular supply of NMO to this tank, as it is done in all major hospitals anyway. So now I would request Dr. Bandekar, he can take over and brief on some technical and medical aspects. Good evening, Honorable CM, Honorable HM, respected Secretary Health, my colleague, Dr. Jaideep Disa. We have found that things are now getting, even on the mortality, we are much better as it's going down. Today the number is 58. We are also starting prophylaxis with a simple concept that since the infectivity is high, everybody will get prophylaxis with ivermectin. Ivermectin is a very time-tested medicine molecule. Even though there are issues on discussions on that, it is one of the best medicines studied by some of the top scientists in US, and there are published papers that ivermectin can prevent severe kind of lung disease. So government of Goa has already decided to make a policy decision to start ivermectin to the patients, because if you see the effectivity rate once upon a time was 50%, so it means every alternate patient could be infected or a carrier of virus. So in that respect, it will protect his lungs and give him a better course of disease. The next important thing was decided yesterday in a meeting of experts, that the protocol followed by the state of Karnataka, where they have found that this double mutant virus, which is seen in the second wave, has got the problem of anybody who gets infected with this double mutant, their oxygen consumption is found to be very high. And this is how they have changed their protocol, and they have added one medicine called as baricitinib. The baricitinib is immunomodulator, which was used for rheumatoid arthritis in immunological condition. Now this baricitinib is 4 milligrams, and it is to be given from 5th day of the symptoms. It works fantastic in reducing the cytokine storm, and the lungs are protected. So this protocol will be adopted soon now. We have already decided to start
for the patients who are admitted in the hospital. So their oxygen requirement will also be less and their lungs will be protected and they will recover fully. So this is one of the recent developments that was done as we are studying about this pandemic. And you know that this virus which has come is a mutant virus and different from the first wave. So as of now, this is what I wanted to share with you all. If you have any questions, I will be happy to answer. Afterwards. You can Afterwards, ask, yeah. you can ask questions afterwards. Now I'll request Honorable HM. Honorable Chief Minister Dr. Pravan Savanji and our Secretary Health Ravi Dhawan, Dean Dr. Bandekar, Director of Services Dr. Disa. सांगपाचें म्हणजे इतलेंच की खुबशे गोश्ट्यो आनी खुबशे तरेतरेचे सिच्युएशन आमकां फेस करचे पडले. आयज मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजाक एक 20,000 लिटर कॅपॅसिटीचो आमकां टाकी आमी गावल्या. मुख्यमंत्री स्वता म्हाका फोन करून त्यांनी ज्यांच्या मेहनता खातीर आमकां आयज टाकी आमकां गावली आनी कमिशन बी जालें टाकी. आतां कमिशन आमी जेन्ना शब्द वापरता आनी आयज इंडिया टुडेक बी हांवें सांगलें की कितेंय मिसरिप्रेजेंट करपाची गरज ना, कारण आमी जे कितें करता मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आयज हे टँकच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्ट मॅनिफोल्ड ऑक्सिजन वयतले आनी डायरेक्ट आतां सेक्रेटरीन सांगल्या प्रमाणे तेजो भरपूर फायदो जातलो. प्रेशर बी बरो पैकी आमकां येतले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी केन्ना जे अनुभव घेवंक ना त्या तरेचो अनुभवांतल्यान आमकां घेवचें पडलें. तरेतरेचे गोश्टी घडटात आनी त्याच बरोबर हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की आनीक मुख्यमंत्रीच्या मनान आहा की आनी एक टाकी दुसऱ्या मॅनिफोल्डाक लावपाचे तेंचे प्रयत्न आसतले. फुडल्या 8-10 दिसां भितर एक 6,000ची टाकी आमी थंय इन्स्टॉल करपाचें मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. आयज तुमी पळयल्यार की आयसोलेशन किट पासून आयसोलेशन किट प्रत्येक घरोघरी दिवपाचें काम सरकारान केल्यार हे सरकार जे आहा जे मुख्यमंत्री नेतृत्व करता हेच्या माध्यमांतल्यान आयसोलेशन किट प्रत्येक घरोघरी पावपाचो काम आमी केल्लें आसा. एक पयलें राज्य देशांत आमचेंच राज्य आशिल्लें आनी आयज प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंट एक्सपर्ट्साक विचारून फक्त गोंयचे न्हू भायल्या एक्सपर्ट्साक बी विचारून आमी तो प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंट आमी चालू केल्लो आसा. कारण इन्फेक्टिविटी रेट चड आसल्या कारणान जे आतां देंवपाक लागले पूण आनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. कित्याक ह्या तरेचो पेंडेमीक हे फुडें कसो अनफोल्ड जातलो आमी कांयच सांगूंक शकना. आनी काल डॉक्टर बांदेकर हांवें मुख्यमंत्री बी सांगलें की मुख्यमंत्री कडेन चर्चा सकाळची आनी सांजची आमची चर्चा जाताच की कितें कितें चल्लां आनी कशें कितें फुडें वचूंक जाय. आनी डॉक्टर बांदेकराक डॉक्टर अनुप अमरनाथ म्हणून जो स्टेट कावन्सिलर जो टास्क फोर्सचो हेड आहा बँगलोर तेंचे माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर्स बसून गोवा मेडिकल आमी जो फोकस ट्रिटमेंट जो दिवंक जाय, लोकांचें जीवन कशें आमी वाचोवंक जाय आनी आमी हे कोविड प्रोटोकॉल आनी हांचे स्ट्रिंजंट ज्या तरेन आमी लोकांचें जीवन वाचूंक शकता. जे इवन 21 सिटीचे वयर जे गेल्ले आसा तांकां कशें परत रिवायव करूं शकता हेजेर आमचें काम चालू आसा. हांव एकूच सांगूंक सोदता तुमकां की आतांच खंयचे तरी चॅनल जाय म्हणटाले की कसलेय गोश्टीक नवे नवे तरेचे विचार आसतात. खंयचीय गोश्ट चालू केली 10 रिपोर्ट्स इंटरनॅशनल आतां डॉक्टर बांदेकरान सांगलें की प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंटा खातीर वॉशिंग्टन थेरपेटिकल जर्नल आनी इतर काही जर्नल्स 10 तरेचे रिसर्च रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आसता. कदाचित 2 वेगळ्या तरेचे तेंचे विचार आसतात. पण आमकां जे लोकांच्या जिवना खातीर आमकां जे कितें करूंक जाय ते मुख्यमंत्रीचे आमकां पूर्णपणे सहकार्य प्रत्येक गोश्टीक गावल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की हो जो मॉर्टॅलिटी रेट आहा आमी ते कंट्रोलान हाडूंक शकतले. केन्ना केन्ना अग्रेसीव स्टेप्स घेवचे पडटात आनी अग्रेसीव स्टेप घेवपाक तेणी केन्ना ना म्हणून सांगूंक ना आमकां की करूं नाका. आनी हे सगळे गोश्टी करपाक आमकां मुख्यमंत्रीचे सहकार्य लाभलेलें आसा. मुख्यमंत्रीचे सहकार्य लाभलेलें आसल्या कारणान म्हाका खात्री आहा की पूर्ण टीम आनी पूर्ण मेडिकल फ्रेटर्निटी जे आमचे बरोबर काम करतात आनी आमचो स्टाफ हे आमी कोविड पॅन्डेमिकाक आमी टक्कर दितले. मॉर्टॅलिटी आमी सकयल हाडटलेच. आनी म्हाका खात्री आहा की जे कितें विशय आहा नवे नवे जे इनोव्हेशन्स आहा ह्यो इनोव्हेशनचो वापर करून भायरचे एक्सपर्ट्स कडेन चर्चा करून आमी आमच्या लोकांचें जीवन वाचोवपाचो हे सरकाराचे ध्येय आनी त्याच दिशेन आमी वयतले. थँक्यू. सबसे पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेशनल मीडिया यहाँ पे हैं, उन सभी का मैं गोवा में स्वागत करता हूँ. इसी के साथ में हमारे लोकल मीडिया पे यहाँ पे हैं.
मेरे सेक्रेटरी हेल्थ रवि ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ब्रीफ करते वक्त उसने बता दिया कि क्रायोजेनिक टैंक ऑफ द 20,000 kiloliters which is given by the Venus Ethoxy company which is from the petroleum industrial estate, within we have shifted within 3 days, 3 दिन के अंदर शिफ्ट करके आज चालू कर दिया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में हमारे डीन हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट और किस तरह से पेशेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे साथ में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने डिटेल में गोवा में किस तरह से ट्रीटमेंट चल रही है इसके बारे में आप सभी लोगों को ब्रीफ कर दिया है। ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीसा, डॉक्टर डीसा हमारे साथ में है, जो हमारे पूरे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत आते हुए सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनमें जो सारी टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट चल रही है इसी के बारे में सब कुछ कंट्रोल वो खुद करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफ करूंगा इस डिटेल में। जैसे क्रायोजेनिक टैंक, दिस इज द थर्ड टैंक स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। पहले टैंक हमने साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, उसे ऑक्सीजन ये वो सब कुछ साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मोर देन 550 पेशेंट्स आर एट प्रेजेंट एडमिटेड और वहाँ पे भी आईसीयू और सब फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। विच इज ऑल्सो द जीएमसी के कंसल्टेंट वहाँ जाके काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यानी अच्छी तरह से एक क्रायोजेनिक टैंक विच इज ऑफ द 6,000 मिलीलीटर 6,000 किलोलीटर टैंक, वो हमारी खुद की नया अस्पताल था, उसके लिए हमने प्रोविजन पहले से किया था। The second tank which is a super specialty, one of the state of the art facilities, जो हमने प्रधानमंत्री केयर फंड्स के अंतर्गत से हमने जो कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट किया था, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट करने में बाकी बचा था, फिर भी कोविड के वास्ते इट्स विदाउट इनॉग्रेशन वी हैव स्टार्टेड एट प्रेजेंट मोर देन 350 पेशेंट्स वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड जीएमसी टू द न्यू सुपर स्पेशलिटी। और वहाँ पे even though along with the ICU, along with the even though HFNO2 high nasal flow oxygen की facilities वहाँ पे available हैं और वहाँ पे जो टैंक अवेलेबल है वो 20 किलोलीटर की टैंक वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। बात बची तीसरी, विच इज द ओल्ड जीएमसी, जो सबसे पहले ओल्ड जीएमसी का ब्लॉक तो मुझे लगता है कि 2000 साल के पहले से बना हुआ था, वहाँ पे मैनिफोल्ड सिस्टम से चलता था। उसके बाद में जो एडिशनल ब्लॉक बना विच इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 2005-2007 के आसपास में बना था, वहाँ पे भी जो ओल्ड मैनिफोल्ड पे चलता था। आज हमें खुशी है कि वो मैनिफोल्ड सिस्टम से हमने क्रायोजेनिक टैंक जो हमें आ गई है आज से, मुझे लगता है कि विच इज ऑक्सीजन विच इज हमने टैंक से सप्लाई करने के लिए स्टार्ट कर दी। स्टैंड बाय वहाँ पे जिस तरह से साउथ गोवा में स्टैंड बाय इन इमरजेंसी जब हमें लगे तब वहाँ पे ट्रॉली खड़ी रहेगी, 24/7 वहाँ खड़ी रहेंगी, इन केस इमरजेंसी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पूरे गोवा में दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट लेवल पे पूरी तरह से यानी पीएचसी से लेवल तक हम पीएचसी टू जीएमसी तक सभी जगह पे एट प्रेजेंट डिफरेंट लेवल पे हम एडमिशंस कर रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं अच्छी तरह से। आज का मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रेट है वो कम डाउन टू द 35%, जो 51% से 35% तक आ चुका है। डेफिनेटली विद द एफर्ट्स ऑफ हमारे सभी मेडिकल पैरामेडिकल्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सभी लोगों की तरफ से ये पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली कम आ जाएगा। आज मैं दूसरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि जितने सारे कोविड हॉस्पिटल विच इज अप्रोक्सीमेटली 21 कोविड हॉस्पिटल, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल एट प्रेजेंट रनिंग इन द स्टेट, इसकी हमने बार बार उनको कहा कि उन्होंने 50% बेड्स यानी कोविड के लिए देना चाहिए था, लेकिन बार कहने के बाद भी उन्होंने 50% बेड्स नहीं दिए। इसलिए हम मंडे से उनके पूरे बेड का कंट्रोल गवर्नमेंट ले रही है और डायरेक्टली गवर्नमेंट विल डू द एडमिशन इन देयर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स और इसके 100% पेमेंट्स जो उनको देना है, पहले हम DDSSY की तरफ से जिसके पास कार्ड रहता था उसकी 80% पेमेंट देते थे, लेकिन मंडे के कल हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और 100% पेमेंट
हम गवर्नमेंट उनको दे देंगे, लेकिन उनका पूरा एडमिशन का कंट्रोल गोवा के लोगों को और जिनके पास DDSSY कार्ड रहेगा उन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट इन नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट बट प्राइवेट अस्पताल में भी यानी मंडे से सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। मुझे लगता है इस तरह से डेफिनेटली हमें कोविड मैनेजमेंट करने में गवर्नमेंट और प्राइवेट इसका सिर्फ यानी एडमिशन का कंट्रोल हम ले रहे हैं, उसका मैनेजमेंट पूरे उसके स्टाफ के साथ वही लोग करेंगे, डॉक्टर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का वही लोग करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे। सिर्फ वहां पे हमारा ऑफिसर्स बैठ के उनके एडमिशंस का कंट्रोल हम ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने 100 किसी के पास समझो अभी 100 बेड है तो डेफिनेटली उन लोगों ने 50 बेड शुड डेडिकेटेड टू द कोविड। इसलिए स्टेट में एक भी पेशेंट इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि जिसके पास है वो एडमिशन चाहिए और उसको एडमिशन न मिले, इस तरह से नहीं रहेगा। क्योंकि एडमिशन जो हमारी GMC में भी हमारी कैपेसिटी विच इज अप्रोक्सीमेटली द 450 की कैपेसिटी थी, 450 to 500 की कैपेसिटी थी, बट हमने 900 पेशेंट एडमिट किए थे। इसीलिए जो कोई GMC में आता था उनको हम एडमिशन कभी ना नहीं कहते थे, क्योंकि हमें डेफिनेटली बीइंग द अपेक्स मेडिकल कॉलेज हमें एडमिशन देना ही पड़ता था। और हमें थोड़ा बहुत यानी टैंक फिल करने के लिए GMC में सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे टैंक स्टार्ट नहीं हो जाती थी हम सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे मालूम है हमारे लोगों को दिक्कत पहुंची, थोड़ा बहुत डिले ट्रीटमेंट सब कुछ जो हुआ, इसी के लिए यानी हम पूरी तरह से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट और सभी लोगों की जान बचाने के लिए हमारी मेडिकल टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी के वास्ते जान न चली जाए, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी। और डेफिनेटली सरकार की तरफ से मैं कहता हूँ कि गोवा के हर एक लोगों को इधर प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट में बेड देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्न करेगी। हाँ, मैं जस्ट वैक्सीनेशन के बारे में बता देता हूँ। हमने 45 के ऊपर का वैक्सीनेशन जो है हमारे चलता आ रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली हमने 45 ऊपर का वैक्सीनेशन अभी डोज अपने पास अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ द रिमेन और 30 partially vaccinated 2,29,291, fully vaccinated 93,338. Okay, and total dose administered as on is the 4,15,967. आज से हमने यानी 18 above के लिए वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, which is 3589 पहले दिन ही हमने 3,589 लोगों को विच इज फ्रॉम द 35 वैक्सीनेशन सेंटर 35 वैक्सीनेशन सेंटर पे हर एक सेंटर पे मैक्सिमम 110 वैक्सीनेशन देना था। मीन्स आई थिंक इट इज एन ऑलमोस्ट 98% 110 लोगों को वैक्सीनेशन देना था, विच इज 35,089 वैक्सीनेटेड डन। बहुत ही अच्छा रिस्पांस द 18 एंड अबव एज के लिए भी मिल रहा है। और बाकी लोगों को भी मैं अनाउंस करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि गोवा में आज तक जितने सारे डेथ हुए हैं एक भी आदमी कोई भी जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुआ और उसकी डेथ भी नहीं हुई। इसीलिए मैं गोवा के सभी लोगों को अनाउंस करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वैक्सीनेशन ले ले। प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या बद्दल आज जी अनाउन्समेंट करता की आम्ही जी की 21 हॉस्पिटल आजपर्यंत कोविडाची ट्रीटमेंट करता, या 21 हॉस्पिटलांचो सोमार पासून कम्प्लिटली चार्ज हो एडमिशनाचो चार्ज गव्हर्नमेंटाकडे उरतलो, मॅनेजमेंट ही त्यांच्याच कडे उरतली, त्यांच्याच लोकांनी ट्रीटमेंट दिवपाची आसा। थंयसरल्या सगळे एडमिशन्स हे गव्हर्नमेंट पळयतले आणि ताज्या उपरांत फक्त म्हणजे 50% बेड ह्यो कंपल्सरी कोविडा खातीर उरतल्यो आणि 50% बेड तेंच्यांनी आपले बाकीचे पेशंट पळोवपाक जाता आणि 50% बेड्स जे आमी एडमिशन करतले ज्याच्याकडे DDSSY कार्ड आहा तेजो 100% पेमेंट हो सरकार करतले, जेणे करून गोंयांतलो एकूय मनीस हो कोविड जाल्या उपरांत जेका हॉस्पिटलायज जावपाक जाय, आयदर ऑक्सिजनेटेड आसतले, ICU आसतलो किंवा तेका फर्दर मॅनेजमेंट आसतली, ही त्या लेवला वयल्यान मॉनिटर करपाचें काम आमचे जे ऑफिसर्स आमी त्या हॉस्पिटलान डेप्यूट करतले, ताज्या उपरांत ते ठरयतले इफ
खंयच्या हॉस्पिटलान जर ICUची फॅसिलिटीज ना एट मायनर लेवल थंय तो मॅनेज करतले ताज्या उपरांत विल सेंड टू द अपेक्स हॉस्पिटल. हे फाल्यां ताजी ऑर्डर येतली आनी सोमारच्यान जे आसा हे कंप्लिटली सगळ्या हॉस्पिटलांचो चार्ज हो सरकारा कडेन उरतलो. आज आमी बरी गजाल आसा की GMCन अजून एक टँक जो आमकां डायरेक्टली ऑक्सिजन सप्लाय करपाक जाय आशिल्लो 20 किलो लिटरचो टँक जो आसा हो GMCच्या मॅनिफोल्डाचेर आमी बसयलो. ताज्या उपरांत कंटिन्युअसली ऑक्सिजन जो आसा हो लोकांक मेळपा खातीर खंयसरूच दिक्कत उरची ना. Okay, we'll have 4-5 questions now. व्हडली हॉस्पिटलांक टेक ओव्हर करता म्हणजे मणिपाल आमी गोंयांतली सगळी हॉस्पिटल आमी व्हडली आनी धाकटी न्ही 21 हॉस्पिटल एट प्रेझेंट कोविड मॅनेजमेंट करता. आमच्या लक्षान आयले की आमी जे शेड्यूल्ड रेट दिल्ले त्या रेटाच्या पेक्षा कितलेशे चड प्रमाणात एक्झॉर्बिटंट ते प्रायजीस कलेक्ट करता. आमी इतके दीस ताका 2 गजाली सांगलेल्यो. आमी थोडे जाण सांगून सुद्दां DDSSYची फॅसिलिटीज लोकांक दिना आनी हिस्पा भायर चार्जीस करता. आपल्याक जाय ताका एडमिशन दिता. ताकाच लागून 21च्या 21 हॉस्पिटलांचे एडमिशन रायट्स हे गव्हर्मेंटा कडेन उरतले, जेणे करून 50% कंपल्सरी एडमिशन हे आमी दितले आनी ताज्या व्यतिरिक्त जे आसा ते तेंच्यांनी पळोवपाचे. तेंचे पेमेंट्स कितें करपाचे आहा ते आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान डायरेक्ट ताका पेमेंट्स करतले. Can we say that the oxygen issue is resolved now Sir, totally? एक करतो please. Sir, sir, can we say that the oxygen issue आता ह्या हिशोबान आमच्या totally कडेन resolved आता? आताच्या घडीक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स मोर दॅन 700 अवेलेबल आसा. म्हाका दिसता आनी ताच्या भायर सिलिंडर्स अवेलेबल आसा. ताच्या भायर आमी पुराय टाकयेचेर शिफ्ट केले. आता उरलेले जशें आत्ताच हेल्थ मिनिस्टरान सांगला एक ओल्ड मॅनिफोल्ड आसा GMCचो त्या खातीर आमी कोविड ट्रीट करिना, ओल्ड पेशंटचे ट्रीट करता. ताजेरूय बी आमचो प्रयत्न आसा फुडल्या एक थोड्या दिसाच्या भितर हांव कितले दीस सांगना जशी आमी ही टाकी एका कंपनी कडल्यान रिक्विजीट केली तशी ती आनी एक टँक आसा ती रिक्विजीट करपाचो प्रयत्न आसा. म्हणल्यार थोड्या दिसा भितर तो सुद्दां मॅनिफोल्ड हो आमी ऑक्सिजन टँक बसयतले हाची खात्री ना बाळगता. कित्याक म्हणटा सर अजुनूय थोडे जाण ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून वयता. सांगूंक सोदता की हांव खरेंच मुख्यमंत्री एकदम निर्णायक अशें बोल्ड डिसिजन आयज घेतलेलें आसा. आमच्या डिपार्टमेंटच्या वतीने हांव आभार व्यक्त करता मुख्यमंत्रीचे, कारण ही गरज आशिल्ली आनी मुख्यमंत्री म्हाका हांव मुख्यमंत्री तेच हिंट करतलो सांगपाक की तुमीच तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कांय कारण अशें आशिल्लें बी कांय एक डेथ जाले खंय बील आयले DDSSYचे 3.5 लाख आनी बील चार्ज करूंक लागले 7 लाख आनी बॉडी रिलीज करूंक ना. म्हणून म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री खंय ना खंय हे सगळे विशय लक्षान आयले आनी मुख्यमंत्रीन ह्या तरेचे एकदम बरे डिसिजन घेतलेले आसा आनी आमी सगळ्यांनी ते स्वागत करपाची गरज आसा. तुमकां परत म्हाका दिसना जर मुख्यमंत्रीचे नियंत्रणान हे सगळे गोष्टी जर जाले जमनीर न्हिदपाचे पेशंटाचे केन्नाच तुमकां चित्र परत दिसपाक गावचें ना. Sir, sir, what how happened? many patients have died in GMC for the till date? How many patients have died in GMC because of drop in oxygen levels? We can't put this as a direct answer, you know. See, people in GMC who come, they are all referred cases because we are tertiary center. Their criticality is high, and most of the patients who die is because of COVID pneumonia, where oxygen is an important part of the treatment. So we cannot directly say that this is the reason why they have died. But if you see their CT severity score, they were all more than 20. In our first wave, we must have seen patients with CT severity score of always less than 10. So this is a basic difference that we must understand. CM, I want to know one thing. There was an issue. Yeah. Just one second. What if there were interruptions in the supply of oxygen? When these patients were admitted, the critical patient, won't it be affecting, I mean, the See, impact? I told you, no, in COVID treatment, oxygen is very important part of the treatment. So there is a scope to say that when Interruption, but it is how to prove that interruption has caused all this. It is. Were you able to see when the dip was happening? Were you able to see, was it the same time that you lost the patients? Was a match made between what was If happening? you see our timings and kind of mortality bulletin that we published, I will show you that it is not only that is the time. That is why I am saying it is absolutely to say that during the dip only this has happened. It is very, it's not with full proof. Were the What you interruptions think, like- you are trying to correlate.
But if you see the timing, the deaths are spread over the full 24 hours. It is not. But Now does it- somebody was asking me that day 2 to 6 is more deaths. I don't believe all that. But Because how we many- have given you the document also. So How many opposition- people died last night between 2 a.m. and 6 a.m.? Between 2 a.m. and 2 a.m., 6 a.m. deaths were, I think, 8. 8 people Yes, have died. yes. 2 Sir, a.m. opposition is saying that 75 people lost their life in 4 days. Is that right or wrong? No, the people. I would like to make a submission here. Opposition generally gives a lot of, makes a lot of statements. We are dealing with a pandemic, and we are doing all what we can is to deal with the situation. Like the Dean has just mentioned, that you cannot correlate a particular death to a particular situation. There may be issues, we are tackling all the issues under the leadership of the Chief Minister, standing there and getting all these things done, getting these things overnight, because the consumption also of oxygen per patient has increased. As I told you, the Dean just mentioned to you a new protocol, we'll circulate it to the media. With this protocol in Karnataka also, the intake of oxygen of the patients has come down. And opposition can make tall claims, but I only would like to appeal to the opposition, also make positive suggestions to us. If they have any suggestions to us to deal with the situation, the opposition should make proper suggestive in this pandemic. This is not a simple situation to deal with. The government is dealing with, and Goa is the only government in the country under the leadership of Dr. Pramod Sawant, where we are giving free medical treatment and all kinds of treatment, all kinds of medication. Yesterday I was sitting with Dean. I was just trying to calculate. There are drugs as expensive as 25,000 rupees. One particular, I think Dean is in a better position. Remdesivir is there. Tocilizumab is there. Several other things are there, and we are doing it all for the people. Right from isolation kit to prophylaxis treatment to all these things. So I would like to, madam, to tell the opposition is to please come with solutions rather than just to criticizing and picking faults on the government. This government will deal with every situation and No, every but are they loophole. wrong? Every loophole, we will overcome this. But But there are was they a wrong? order also from your GMC government, the Mr. mechanism Rani. I don't want to get into anything. The Dean is Because a people technical. believe that I don't want. 70 I people want to died. only tell you one thing is that the Dean is a technical expert. From now, it is better the technical experts only answer the questions of the media. As a result of which, I would like the Dean to take a question and answer these questions. What, Again, what, Sir, I'll just give you my scientific reasons. I am not on anything. See, I also look after South Goa District Hospital. There the bed capacity is about 500, 550 sometimes. Even there we lose patients, about 20 patients, average or 20, 25 patients. And if you see ITU, ICU there, it is just 18 bedded. Now, if you see ICU, ITU or the criticality of patients that are admitted in GMC right now, I have 160 critical. They are on ventilators. Huh? That's why the consumption is also more. Try and understand that sudden spike, it was like a tsunami. That sudden spike also had brought a lot of surprises to us. And we are trying to make that whole thing meet, We got concentrators within no time, we got cylinders bedside within no time. And we are the centers where we cannot refuse any case. Even the patient comes in a gasping state, or if he is coming in the what is called as very this high respiratory rate and is gasping. So many patients have come and died before 24 hours, 8 hours, 7 hours. They were shifted in that condition, so they have come. So we cannot have this kind of a singled out attitude that they were because of this reason. Yes, one has to see the whole story in correlation. And South Goa district, I'm telling you, they don't get so critical. The kind of criticality we get. Even South Goa district refers critical cases to Goa Medical College. One important thing in Goa Medical College, we don't refuse any case. Patient comes with gasping also, we take him, we resuscitate him. There is 20 bedded big CCRI where we try to save him. And if his score is even 24 out of 25, we have saved. Many patients have gone back also after treatment. It is not that patients have come and only died. I can give full data of how many patients have recovered in spite of all these difficulties. So it is very difficult to make that statement. This is because of deficiency. CM, One CM, second, one CM, second. CM, We could I want to ask you one question. One second, one one second. second. One One second. second. Doctor, what I want to ask you is this.
now this is COVID. Everybody is on COVID. Now we've been getting calls from various hospitals about other diseases besides COVID. All concentration is going on COVID. Diabetes, dialysis. So all about that. Is anybody looking into that aspect of the treatment? See, Because in we've been getting GMC calls. I've been personally Yeah, getting yeah. calls at 2-3 in the In morning from all these GMC, places. What Honorable about that? Minister already moved a note that certain non-COVID OPDs have to run. And we fully agree that there are poor patients who cannot go to anywhere except GMC is the big hope. So right now, if you ask me, we have about 280 non-COVID cases whom we are treating. Like my orthopedic department, right now we have about one ward is full of 30-bedded orthopedic cases, trauma patients. Neurosurgery is almost 18 beds out of 30. So these facilities, these services also we are giving. But is the concentration going there, especially kidney, I'll- dialysis, I'll- which is a big I'll- problem? I'll- So, sir, one question for the Chief Minister. Sir, Same, one same, question for the Chief Minister. Sir, Same, just one, Sir. Same. Like you, so what you suggested, nephrology, oncology, like chemotherapy is to work, it's Yes. all going on because you cannot change it, postpone somebody's cycle. The government is in full know of this. And second thing, as we speak, Dean has forgotten to mention a particular point. We have more than 140 to 150 patients admitted in GMC with 25 CT score. So remember that these are critical patients. And like what Chief Minister has done today, very few states would have done, taking over all the private hospitals today in the state of Goa. Admission of beds will be directly under his monitoring and the government of Goa's monitoring. And we have to understand is that situation is not easy, situation has to be dealt with, and we will deal with the situation. CM, Sir, CM, sir, CM last year इतने डाले हैं इसका कारण क्या है? CM just No, one no, sir, sir, please, sir, this is, CM sir, 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 your comment. Answer about this. See, Dean the ने answer oxygen कर दिया सब consumption कुछ. of all the hospitals, please if the tell us what- administration is under government now, what about the private hospitals? Like, how will you deal with the oxygen distribution to all? Can you just give us a summary of that? Like, the new, the tank is at GMC. So, when will it start? When will the oxygen start? She Like, started that. Miss Aman, should I answer this? Yeah, yeah. See, private hospitals already have their oxygen contractual agreements for oxygen supply with private suppliers. Manipal has an LMO tank of similar nature as the one installed in super specialty and GMC. Similarly, other hospitals have their oxygen. Those will continue. Those are already continuing. They are being honored even now, and the same will continue. And which private hospitals have faced. Sometimes we have got SOS calls that they need oxygen. We supply to them from our supplier also, Sir, right? क्या Sir, High Court, गोवा sir, High सरकार Court has सेकेंड वेव के लिए apologized. रेडी नहीं थी? क्या गोवा सरकार सेकेंड वेव के लिए रेडी नहीं थी? प्रिपरेशन ठीक से नहीं की गई और लॉकडाउन सही समय पर नहीं लगाया गया? Oh. मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ इसमें, क्योंकि हमने जब मैंने पूरा एसेस करके जो डिसीजन लेना चाहिए था तब डिसीजन हमने ले लिया है। यानी जिस तरह से हम मैनेजमेंट करते थे तभी इसीलिए जो स्टेट कर्फ्यू पहले जिस तरह से लगाना चाहिए था, क्योंकि पूरा स्टेट एकदम हम बंद नहीं कर सकते थे, एट बाय असेसिंग एट ऑल एंड वी हैव टेकन द डिसीजन एट प्रॉपर टाइम। और हम उसके लिए तैयार भी थे और इसी की तैयारी अच्छी तरह से, क्योंकि गोवा बहुत छोटा स्टेट है, हम हर एक की ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। यहाँ पे एक भी डेथ जो ब्रॉड डेथ भी आता है उसकी हम टेस्ट करते हैं। मुझे पता नहीं रेस्ट ऑल, बट यहाँ पे हर एक की टेस्ट होती है। इसीलिए तो हमने हमारा रेट 51% तक भी गया, अभी 35% आया। डेफिनेटली मुझे ये मतलब मन में क्योंकि वो कम भी हो जाएगा 10 से नीचे ही। इसलिए जो 100% जो टेस्टिंग के लिए आता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ओनली आता है वो नहीं, उनको ला के भी हम टेस्ट करते हैं। गोवा के हर एक पीएचसी के लेवल पे हमारा टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। इसीलिए तो पॉजिटिविटी रेट हमारा ज़्यादा है। और गोवा में कहाँ पे भी डेथ हो गई, स्टेट में पूरी बात कर रहा हूँ मैं, घर पे भी डेथ हो गई तो उसको अस्पताल में लाने के बाद हम टेस्ट करते हैं कोविड की, उसके नॉर्म्स फॉलो करते हैं। इसीलिए यहाँ के आपने डेली का रिपोर्ट देखा तो ब्रॉड डेथ में आपको कम से कम 3 या 4 डेथ विच इज द ब्रॉड डेथ मिलेंगे। ओके, बाद में कम से कम आपको 10 से 12 डेथ इट इज विद इन 24 आवर्स एडमिट किया और डेथ मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, विच इज 100% ट्रांसपेरेंसी, यू कैन गो थ्रू द रिपोर्ट ऑफ एवरी पीएचसी लेवल से लेके जीएमसी लेवल तक,
इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी लगते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सर क्या report ज्यादा सर, है। High Court- sir, High Court has जो said- death हुई वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुए।